Good morning. Good morning, everyone. Am I audible now? Yes? Okay, very good. Very good. Everyone has copied those rules of Roman numbers. Rules of Roman numbers, everyone copy? सबने copy कर लिए? Okay, today I am going to explain those rules. Okay? Those who have not copied, you have to copy it today. जिसने copy नहीं वो आज copy कर लेगा. Got it? Today I am going to explain those rules. तो अभी आपको कुछ लिखना नहीं है because you have already written the rules. Okay? Juja, wait. What doubt you are having? Vijay, क्या डाउट है? Vijay, on your mic. Sir. Yes, sir. Yes. Sir, in the exercise 1.5 question number 3, I can't understand F and G because there are 3 numbers. All I have solved, but I can't understand those. 1.5. F and G, question number 1.5, question number 3, F and G. Yes, sir. हाँ चलो मैं दोनों बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Okay guys, see first I am going to explain the question number 3, F and G. Then after I am going to explain the rules. So if you have not done or if you are having confusion in F and G part, F part. F consists 17 multiplied by 25 minus 7 multiplied by 25. Okay. In this you have to take the common. Vijay, इसमें common है. What is common? 25 यहाँ से मैंने common ले लिया तो बात करने क्या रखा? Only 17 and minus I have taken the common from the second term 25. So what is the meaning of the second term? Only 7. And I have also explained this picture on the board. 25 into 17 minus 7 what will come? 10. What will come? Now understand reason. अब समझ आ गया? Say yes or no. Vijay. Now understand? बेटा 25 यहाँ पे भी है 25 यहाँ पे भी है 25 में कॉमन लेना है. जैसे ही कॉमन लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में इस नंबर में 25 ऑलरेडी कॉमन ले लिया है. तो व्हाट विल बी 17 माइनस साइन लगा देंगे. इस नंबर में 17 कॉमन ले लिया तो व्हाट विल बी 7. 17 माइनस 7 क्या आ जाएगा 10 and 25 will get 2. Now understand? Because 25 is present on both the terms. 25 दोनों टर्म्स में जो दोनों टर्म्स में होगा उसी को केवल कॉमन ले सकते हैं. Now understand? दो टर्म. And second question is 34 into 9 plus 34 into 1. ऐसे ही. What is common? दोनों में कॉमन है 34 and 30. 34 कॉमन ले लेंगे. What is the remaining of the 9? Second term 1. So that is 34 into 9 is the sum what will come? 10. Okay? Understand? 340 will come. 34 will not come. We'll tell us. Nishtha, what doubt you are having? On your mic. Wait. What doubt you are having? Sir, I have doubt in E1 and D1. Which ones? E and D of exercise 1.5 question number 3. 3 का E and D. Yes, sir. हाँ चलो वो भी मैं करवा रहा हूँ. Okay, that also I'm going to solve. Everyone noted down? Say yes or no. Vijay, copy it.
Say yes or no, Vijay. Copy the solution. Okay. This side is having out the E part and D part. D part is 22,104. So we can write 22,104 exercise 100 plus 4. Okay. Now 22 multiply 100 and 22 multiply 4. So you can write 22 into 100 plus 22 into 4. This part. This step understand? Say yes or no. This part. Okay. Now let's do the multiplication. 2200 is equal to 88. 88 will become. Okay. Note down the solution. Note down the solution. This part. Written. Mr. Copy. Write it fast, quickly, jaldi se. Better write fast. Copy. ई पार्ट को हम दो मेथड से कर सकते हैं. सपोज 99 तो दो मेथड है. फर्स्ट मेथड होगा 998 12 998 12 को ब्रेक करिए 10 तो मैं आपको 998 10 998 we are at 998 1 and 18 plus 1 19 1 2 and 18 plus 1 19 दोनों को ऐड करें 0 plus 6 9 plus 8 17 plus 7 1 9 plus 9 50 plus 1 19 1 9 plus 1 10 plus 1 11 एक बार लिया. ओके. दूसरा मेथड ये है कि मैंने 998 12 का होना है. ओके. नाउ व्हाट यू कैन डू 998 को ऐसे ब्रेक करना 1000 माइनस. ओके. यू कैन ट्राई 12,000 minus 7. Now, 12,000 minus 24, what will come? 6, 7, 9, 1. दोनों का आंसर सेम ही है. Got it? Mr. Understand? Mr. Understand? You can apply any one of the methods. Both the methods are correct. Note down. Note down quickly. It's okay, no problem. You can apply any one of the methods. You don't have to do both the methods. Okay, Dvija? Start copying. बेटा कॉपी हो गया.
Copy. A and B I have already done. Who is this Panchotia? Okay. Now I am going to explain the rules of the Roman numbers. So first we have drawn the chart. Okay, सबको पता है 1 कैसे लिखते हैं, 5 कैसे लिखते हैं, 10 कैसे लिखते हैं. 1, 5, 10, 50, 100, 100, 500, and 1000. Okay, you know 1 you have to write like this, 5 you have to write like this, 10 you have to write X. Okay, 50 means L, 100 means D, 500 means D, and 1000 means M. Everyone knows this thing? Okay, इतना सब समझ में आ गया? Say yes or no. Okay, so you have to remember. अगर हमें 2 लिखना हो then what we have to write? 3 लिखना हो तो like this. 4 लिखना हो तो you have to write like this. Okay, all these things we have already known. Now rule number 1. I am going to explain the first rule. Rule number 1 is if a Roman numeral is repeated, then the value is added. Okay, among the given Roman numerals, only I, X, C, and M can be repeated. Okay, I, X, केवल इतने नंबर को हम रिपीट कर सकते हैं. We cannot repeat B, L, and D. इनको रिपीट नहीं कर सकते, केवल इसको रिपीट कर सकते हैं. Okay, सपोज अगर इनमें लिखना है like this, you can write 1 plus 1. X होता है, X लिखा होता है 10 plus 10. 20 होता है, अगर C लिखा है, 100 plus 100. 200 हो जाएगा. Everyone knows this rule? Okay, और अगर M लिखा है, ये क्या हो जाएगा? 1000 plus 1000. Got it? Everyone understand? And one more important thing, you cannot repeat more than 3. 3 बार से ज़्यादा हम repeat नहीं सकते. अगर कहीं भी तुमने लिख दिया I, this is invalid. क्योंकि यहाँ 4 times repeat हुआ है. If you have written X, this is wrong because we have repeated 4 times. Okay, so you cannot repeat more than 3. 3 से ज़्यादा बार repeat नहीं कर सकते. You can repeat only 3 times. More than 3, it's not valid. This much everyone understand the rule number 1. We can repeat only I, X, C, and M. We cannot repeat B, L, and D. And we can repeat only 3 times. Okay? Swami Bhimani, I cannot rotate my mobile. I will get the less space. बोलो द्विजा, क्या डाउट है? Sir, I don't have any doubt. Sir, I have Who was having? हाँ बोलो. Sir, आपने ये जो rule number 1 सिखाया, if we write D 2 times, that means the answer is 1000, right? Because 1 D is equal to 500. So if we repeat D 2 times, so answer will 1000. But listen, you cannot repeat D. D को हम repeat नहीं सकते हैं. ये भी तुमने बताया. B, L and D we cannot repeat. Okay? तो सर अगर हमें 1000 चाहिए होगा तो हम कैसे करेंगे? 1000 what? Sir, if we need 1000, then how we will solve it? You can write M. 1000 का M already होता है. See table देखो. Got it? Okay, sir. चलो okay. So we can repeat 2 times, 3 times, not more than 3 times. Any confusion in the rule number 1? Everyone understand the rule number? Please type 1 in the chat box. If you understand the rule number 1, please type 1 in the chat box. Okay? Now rule number 2. Rule number 2 is
If a Roman numeral having the smaller value is written to the right of the Roman numeral having the greater value, then both the value will be added. Suppose one is x and I. This is greater and this is smaller. अगर greater से आगे smaller मैंने लिख दिया, इसमें हमें दोनों को ऐड करना है. x की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी है. आंसर आ जाएगा ऐसा. Got it? Suppose मैंने लिखा b, I is greater and this is smaller. Greater के आगे से smaller को ऐड कर देना है, ऐड कर देना. ये क्या हो जाएगा? Everyone understand? Suppose I have written like this. I. This is greater and these are smaller. So this will be 5 plus 2. Everyone understand the rule number 2? If you understand, please type 2 in the chat box. Suppose I have written C and L. C is 100. This is greater and L is smaller. So you get 100 plus 50. To understand the rule number 2, please type 2 in the chat. Okay. Rule number 3. Rule number 3 is reverse order. Rule number 3 is the reverse order. Rule number 3 is अगर मैंने स्मॉलर पहले लिखा और ग्रेटर बाद में तो सबट्रैक्शन 5 माइनस 5 का आंसर आ जाएगा 4. Got it? ऐसे अगर मैंने लिख दिया I x यहाँ पे स्मॉलर है ये ग्रेटर है. अगर मैंने स्मॉलर पहले लिख दिया ग्रेटर बाद में यहाँ पे ये स्मॉलर है and this is greater. तो सबट्रैक्शन यहाँ करते हुए आंसर आ जाएगा 9. Got it? Okay. Then there are the few more rules. One can be subtracted only from b and x. I होगा I. वो केवल subtract होगा b and x. Okay. तो अगर मैंने ऐसे लिखा I3 या I3, then this is not valid. ये valid नहीं होगा. Okay. Then x can be subtracted only from L and C. X subtract only L and C. Okay? Got it? Then C can be subtracted only from D and M. C can be subtracted from D and M. Everyone understand? Rule number 3. C can be subtracted only from D and M. X can be subtracted only from L and C, and 1 can be subtracted from B and X. If you understand the rule number 3, please type 3 in the chat. Abhijit, what doubt you are having? Sir, Hello. sir, how can we understand that here we have to do addition of Roman number, and how from here we have to do subtraction? How can we understand that? एडिशन में स्टार्टिंग में ग्रेटर होगा और में स्मॉल होगा. लाइक बी आई, तो बी ग्रेटर है ना आई से. Yes, sir. Greater. सेम अगर मैंने लिखा एक्स आई, तो एक्स इज ग्रेटर. Sir, x is greater than I. Yes, sir. हाँ, तो अगर ग्रेटर पहले लिखा और स्मॉलर बाद में लिखा, इट मीन्स हमें एडिशन करना है. अगर स्मॉलर पहले लिखा और ग्रेटर बाद में लिखा, इट मीन्स हमें सबट्रैक्शन करना है. दैट आई वाज टेलिंग. Understand? Yes, sir. That understand. And that in this rule number 4, Vx, so the V अभी is मैंने रूल smaller नंबर than 4 x. एक्सप्लेन ही नहीं की. रूल नंबर No, sir. आपने वैलिड और इनवैलिड बोला ना, तो इसीलिए. हाँ, तो लिखा है ना L and D cannot be written to the left of Roman numbers having the greater value. मतलब B, L and D को हम सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं. ओके? Okay, sir.
We can write Ix, but we cannot write Vx. Okay? Okay, sir. बिकॉज अगर हम Vx लिखेंगे तो Vx का मतलब है 10 - 5 एंड 5 के लिए ऑलरेडी मैंने V दे रखा है. तो एक नंबर के लिए हम दो रोमन नंबर नहीं लिख सकते हैं. देन कंफ्यूजन विल बी क्रिएटेड. दैट्स व्हाई दिस रूल हैज बीन असाइंड. गॉट इट? Yes, sir. Got it. चलो ओके. नाउ रोमन नंबर्स V, L and D. V, L and D कभी भी स्टार्टिंग में नहीं है. ओके? राइट? VX, LC, then DX. ओके? ये सारे स्मॉलर हैं. ये सारे ग्रेटर हैं. ओके? These all three numbers are not valid. Why? Because we cannot write V, L and D in the starting. Okay? ऐसा नहीं हो सकता है कि V, L और D के बाद कुछ ग्रेटर होना. You can write like this. V can be I because I is smaller. But V can be ऐसा मतलब वो बड़ा. Okay? Like we cannot write like this. Vx. Vx is valid. What is the meaning of Vx? Okay? Everyone understand? Because अगर हम Vx को V के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5. 5 के लिए ऑलरेडी हम V. तो एक नंबर के लिए दो नंबर नहीं कंसीडर होता है. That's why this rule has been designed, and you have to learn these rules and you have to follow these rules for answering the questions. Any confusion in the rule number 4? किसी को rule number 4 में कोई confusion? Okay? Now the last rule is अगर किसी के rule number के ऊपर बार आ जाए. Okay? बार small line. इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई कर देना है फॉर्मूला. सपोज b बार इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई कर देना है. सपोज x बार ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई कर 1000. अंडरस्टैंड? तो अगर बार आ जाएगा तो हमें क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली 1000 जिस भी वैल्यू के ऊपर बार आया. एनी कंफ्यूजन का रूल? किसी को रूल्स में कोई कंफ्यूजन? Any confusion in the rules, guys? Okay, everyone please copy the question number 1. Question number 1, A part. Copy karo quickly. Exercise 1.8, question number 1. A part is LXXIV. L. L means 50, X, triple X, sorry, I have written double X. Triple X means 10 plus 10 plus 10. What is the meaning of IV? IV का meaning क्या है? What is the meaning of IV? Please type the answer in the chat box. What is the meaning of IV? 4. Do the addition and tell me what will come. 84. The answer. Okay? Note down. Everyone note down. जल्दी से note down करो. Copied? Everyone copied? Everyone copied? Okay. Now write down the D part. D part. B and C is in the homework. Triple C. C के ऊपर बात लगा हुआ है. Then XLI. Okay, triple C, then XLI.
Okay. What is the meaning of this? C का मतलब होता है 100. But C bar कहाँ है? 100 is also 5 0. Everyone understand this? Okay. Then the meaning of this 100. The meaning of this 100. अब यहाँ पे लिखा हुआ XL. XL. The meaning of L is 50. XL का मतलब 40. Okay. Now you can do the addition. That is 200. Like a 241. You don't have to write down 10 here. मैंने बताया था अगर किसी भी रोमन नंबर के आगे ग्रेटर नंबर आएगा पहले स्मॉलर नंबर होगा सब्ट्रैक्शन होगा ये एल की वैल्यू 50 माइनस करेंगे 40 आएगा अंडरस्टैंड दिस इज द पार्ट नंबर डी क्वेश्चन नंबर 1 डी पार्ट द आंसर ऑफ ए पार्ट वाज 84 विजय ए पार्ट का आंसर 84 था How 86 will come? That was IV, not VI. Vijay. IV ka meaning 5 minus 1, 4. Not 5 plus 1. What you are doing? Understand now? Vijay, clear the doubt? Anisha, क्या doubt है? Sir, I didn't understood why you took sir आपने दो C को 200 ले लिया तो अगर हम C को इंडिविजुअल करके 100 प्लस 100 लिखे तो चलेगा? हाँ तो C फर्स्ट C के ऊपर 12 से मैंने फर्स्ट C को 10,000 लिया सॉरी 1 लाख लिया वो समझ में आ गया? यस सर. फिर सेकंड C दो अलग अलग है तो मैंने 100 लिया दोनों को. तो सर आपने नीचे 1 लाख प्लस 200 प्लस 41 क्यों लिखा? बेटा 100 प्लस 100 ऐड करेंगे तो 200 ही आएगा ना. मैंने सिंपलीफाई किया है बाद में. और सर बाद में आपने नीचे 200 और 41 का 241 करके आंसर दे दिया. आगे समझ में सिंपल मैंने 1 बाय 1 एडिशन किया है. Any confusion, guys? किसी को कोई confusion? That I know, मुझे पता है. Everyone copy out. Everyone copied? स्वरा सोनी क्या डाउट है? स्वरा वेट गाइस. स्वरा ऑन योर माइक.
Swara, on your mic. बेटा स्वरा. सर, यस सर. हाँ बोलो. सर, मैं ना, मेरा जो चैप्टर 3 है वो बाकी है. फिर हमें कल बाहर जाना है, तो मैं मुझे सबमिशन में देना, तो कैसे दूँ? चैप्टर 5 मुझे आप कोई सेंड कर सकते हो? No, I cannot send. I don't have the solution. You have to take it from your friends. अगर किसी फ्रेंड का कांटेक्ट नंबर है तो चलो. Swara, I will send you. चैप्टर 3 सर. Okay, now talk to your friends. In the classroom, you don't have. Everyone copy? Chalo, okay. Now question number 3. Question number 3. You have to find out which one is correct and which one is incorrect. The first question is CLL. Okay? CLL. C means 100. M means 1000. The rule was C can be subtracted from 1000. Okay? And L means 50. So what is the meaning of C? C is what है. M का मतलब होता है 1000 और C का मतलब होता है 100. C पहले लिखा हुआ है 1000 इसका मतलब क्या होता है? 9. L means 50. You have a 950. That is correct. Correct. No problem. Okay, this is correct. Note down. Everyone note down. This is correct. There are no issues in this one. Everyone done? Okay, second one is D1. D1 is XDVI. XDVI. Okay, but एक रूल मैंने बताया था X can be only subtracted from L and C. X can be only subtracted from L and C. X को केवल L and C से subtract करना है. But यहाँ पे क्या ये X दिया, so that is not possible. That is not possible. So this is incorrect. Got it? Note down. That is incorrect. Everyone note down. Written everyone? If you have copied, please type X in the chat box. सबने कॉपी कर लिया? Say yes or no. Everyone copied? Write it fast, quickly. जल्दी से करो. Everyone copy? Okay.
Okay, now in today's homework, you have to complete this exercise. The exercise complete करनी है. Okay? Got it? Okay. You don't have to leave the space. इसके बाद लिखो rounding off. Put the heading rounding off. You don't have to leave the space. Rounding off. इसमें मैं भी कैसे rounding off करते हैं? Nearest to 10. Okay. Nearest to 10. Suppose I am giving the number 7, 2, 4, 5, 7. और हमें राउंड ऑफ करना है इसको नियरेस्ट टू 10. नियरेस्ट टू 10 के लिए क्या करेंगे हम? 4, 5, 7. Okay. In 10, how many digits are there? 10 में कितनी digits हैं? Write the number in the chat. How many digits are there in 10? ये जो 10 है इसमें कितनी digits हैं? 2. हम केवल लास्ट के दो नंबर सेट करेंगे. ओके. 57 50 और 60 के बीच में आता है 57. It comes between 50 and 60. Okay. Which one is closer to 57? 57 के close कौन है? 60 या 50? Type the answer in the chat box. Which one is closer to 57? 50 or 60? 60. तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा? 74 57. Understand? Any confusion, guys? If you understand this near to 10, please type 1 in the chat box. Advija, क्या confusion है? You are always having the confusion. What? Sir, if any number is given like 55 instead of 57, so what can we do? 50 or 60? Then you have to take the maximum value. 60 ही लेंगे. अगर middle में आ रहा है 55 तो हम 50 लेंगे. Got it? Maximum value we have to take. Okay, sir. चलो, okay. Sir. Yes, who was asking the doubt? Yes. Wait. Sir, in exercise 1.8, second one, the second question, A1, 1, 2, 5, 6, answer was? बेटा 1.8 का second one मैंने करवाया ही नहीं है. 1, 2, 5, 6. That you have to do by yourself. इसको अपने आप करना है. Got it? Okay. Everyone the nearest 10. Suppose nearest to 10 from 10 in the chat. Suppose nearest to 10 from Naya. If you understand, please type 10 in the chat box. Guys, am I audible? Type in the chat box. Note down. Those who have copied, please type X in the chat box. सबने कॉपी कर लिया? You have to copy it now. इसको कॉपी करना है. Everyone copy? Anyone is there who is still writing? Anyone is there who is still writing? Okay, now nearest to 100. Next heading is nearest to 100. Okay, nearest to 100. The number is same. 73457. In 100, how many digits are there? 100 में कितने digits हैं? In 100, how many digits are there? 3. So हमें 3 number, last 3 numbers को drop करना है. 457. 400 और 500 के बीच में. 457. 457 is closer to which number? 400 or 500? 400 के close है या 500 के close है?
457. It is close to which number? It is close to 400 or it is close to 500? 500. So the answer will be 500. Have you understand? Any confusion, guys? Note down. Note down, note down. Everyone note it down? If you have copied, please type X in the chat box. सबने कॉपी कर लिया? If you have noted down, please type X in the chat box. And those who are writing, please type 1 in the chat box. Everyone, please reply me so that I can move forward. Vijay, Nissa, Ashutosh, Shyam, done? Now nearest to 1000. Nearest to 1000. That is the next heading. That is the third heading and the last heading. Again, the number is same. Okay? 7, 3, 4, 5, 7. In 1000, how many digits are there? 1000 में कितने digits हैं? In 1000, how many digits are there? 4. So we have to consider the 4 numbers. This will be 3000. 357. Close to which? 3000 or 4000? किस नंबर की तरफ क्लोज है? 3000 or 4000? No, it's wrong. The answer 4000 is wrong. 3457. यहाँ से हम 3000 पे इजिली पहुंच सकते हैं, 4000 पे इजिली पहुंच सकते हैं. इधर गैप कम है. Gapping is less. Which side? 3000 side or 4000 side? 3000 side. So we have to write 7, अगर यहाँ होता 557, not 4000. Everyone understand rounding off? सबको rounding off समझ में आ गया है? Say yes or no. Any confusion in rounding off? Chalo, okay. Now I am going to take your attendance. In homework you have to complete 1.8. 1.8 complete steps. Okay? Rounding off from how much? Mannat Arya, what doubt you are having? Yes, Mannat, bolo. Yes, Mannat. Sir, but when you are doing in 100, if after 550 it is a number, then we have to go in the larger side or in the smaller, मतलब maximum और minimum. मैक्सिमम नहीं, जहाँ पे गैपिंग कम होगी ना, जहाँ से हम सपोज इसमें था 3457, तो क्लोज किधर है? क्लोज का मतलब किधर हम इजिली पहुंच सकते हैं? 3000 की तरफ इजिली जा सकते हैं या 4000 की तरफ इजिली जा सकते हैं? किस तरफ इजिली जा सकते हैं? टेल मी. Sir, near 3000. हाँ, तो 3000 विल बी द आंसर. सेम उसमें भी था, जिधर हम क्लोजली जा सकते हैं उधर हम लेंगे. अगर यहाँ पे होता 5457, तो हम इसमें 4000 सेलेक्ट करते हैं. ओके ओके सर. चलो, नाउ अटेंडेंस प्लीज. माही अघारा, सारंग अघारा, मन्नत आर्या, मुबीन भक्तरिया, यश भयानी, श्याम भिमानी, यश श्याम, सौम्य भिमानी, जय चारोला, भव्य साई,
भव्य साई, नीव, जिया देसाई, जिया देसाई, आमना पायक, श्याम गामी, श्याम गामी, ऋषभ गांधी, निष्ठा, ऋषभ गांधी, निष्ठा, दिव्य, यशिका जैन, यशिका जैन, प्रियांशु, सॉरी वीर कहला, प्रियांशु, दर्शिल, नीरवा, नीरवा, ओके, हैरी पटेल, यशवी ठक्कर, हीरो, हीरो. Who is this Panchotia? Please type your name. Hero, नियति रयानी, नीरवा पंचोटिया. ओके, अक्षरा रानपरा, हीर, वीर, हीर एंड वीर, स्वरा सोनी, द्विजा, सौम्य त्रिवेदी, काव्य वडेरा, स्मित, स्मित वसानी, आशुतोष सिंह, भेष. चलो, okay guys, bye bye, take care, have a nice day. Veer is present, and what about Heer? Heer is absent. चलो, bye bye, take care, have a nice day.